Once again, welcome to the second part of the video, that is formal proof of validity. So this was the last example that I showed you in my previous video with the help of the 19 rules. Okay. So the third premise जो है, we use the premise 2 and addition rule. The fourth premise, we use the premise 3 and communication rule. The fifth premise, we use 1 and 4 and modus ponens. The sixth premise, we use fifth premise and simplification. The seventh premise, we use the fifth premise and the rule of association, which is the rule of replacement. And the last conclusion, we successfully reach the conclusion with the help of the seventh premise, and the rule is सिंप्लीफिकेशन. सो वंस अगैन आप लोगों को अच्छी तरह से द रूल ऑफ इन्फरेंस और रूल ऑफ रिप्लेसमेंट अच्छी तरह से समझना होगा और याद करना होगा इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी. नाउ लेट अस गो टू द सेकंड काइंड ऑफ प्रूफ, दैट इज कंडीशनल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी. उसके लिए भी अलग रूल है. सो दिस इज द रूल सी पी हॉर्शू क्यू पी देयरफॉर क्यू एंड द रूल इज सी पी. दिस इज द रूल. ठीक है. सी पी मतलब कंडीशनल प्रूफ. सो ये मैंने एक सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल प्रूफ. कंडीशनल प्रूफ हमेशा उन कंक्लूजन पर लागू होता है जो कंक्लूजन कंडीशनल प्रोपोजिशन है. लाइक ए हॉर्सशू F. This is a conditional proposition. For example, if he comes, then I'll go to market. Or if he does not comes, then I will not go to picnic. Okay, so this kind of conditional proposition में conditional proof use होता है. तो इसको हम लोगों ने rule use किया P horseshoe Q P therefore Q by CP. So this is the rule, and that we applied in the conditional proof. Okay, then by using the similar 19 rules of replacement and inference, we reach to the conclusion that is F. ठीक है. So for your convenience, let me take one more example of conditional proof. और एक example लेती हूँ मैं conditional proof का. Let us write the question. Okay, see, दिस इज़ द क्वेश्चन, दिस इज़ आवर कंक्लूजन. और हम लोगों ने जो थर्ड प्रेमिस निकाला है वो कंडीशनल प्रूफ से निकाला है. ओके, पी हॉर्सशू क्यू पी देयरफॉर क्यू. सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट एंड प्रूव द conclusion, that is I, with the help of the 19 rules. Okay, so number 4, B dot C 1 and 3 modus ponens. Number 5, B 5 simplification. Number 6, B well C 6 addition. Number 8, we reach the conclusion by using 2 and 7 premise and modus ponens. C. ठीक है. So this is conditional proof and this is the rule of conditional proof. Okay, now मैं अभी आप लोगों को और एक proof दिखाती हूँ, that is indirect proof of validity. Okay, before proceeding to the indirect proof, मैं ये फॉर्मल कंडीशनल प्रूफ मैंने कैसे किया विद द रूल्स में एक बार आप लोगों को फिर से समझा देती हूँ विद बाय शोइंग यू द रूल्स. सो ये जो कंक्लूजन हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है, हम लोगों ने CP यूज़ किया है, कंडीशनल प्रूफ. ओके, P हॉर्सशू क्यू P देयरफॉर क्यू.
ये जो हम लोगों ने निकाला है फोर्थ प्रेमिस 1 और 3 को यूज करके, 1 और 3 को यूज करके, और मॉडस पोनेंस. व्हाट इज मॉडस पोनेंस? P horseshoe Q, P therefore Q. 1 is P horseshoe Q. Okay. 3 is P therefore Q. P horseshoe Q, P therefore Q. ठीक है, मॉडस पोनेंस. नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन मतलब P डॉट Q therefore P. तो हम लोगों ने 5 P डॉट Q therefore P. सिंप्लीफिकेशन. दिस वन इज एडिशन. एडिशन मतलब विद द वेल साइन यू कैन ऐड एनी वेरिएबल. सो B हम लोगों के पास ऑलरेडी है, सो विद द हेल्प ऑफ एडिशन हम लोगों ने C ऐड किया है. एंड द लास्ट वन इज नंबर 8, द कंक्लूजन. वो हम लोगों ने 2 और 7 मॉडस पोनेंस अगेन. सी 2 P horseshoe Q 7, sorry, not 7, it's 6. Okay, this is 6 P horseshoe Q, P therefore Q. There is some mistake, let me rectify it. नंबरिंग में थोड़ा गलती हो गया यहाँ पे. 4, this should be 4. 1 and 3. ओके, वंस अगेन नंबरिंग मैंने अभी करेक्ट कर लिया है. वंस अगेन हम लोगों ने 1 और 3 मॉडस पोनेंस यूज किया. व्हाट इज मॉडस पोनेंस? P horseshoe Q, P therefore Q. ओके, 1 इज P horseshoe Q, 3 इज P therefore Q. ओके, therefore Q. यहाँ पे हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन यूज किया है 4. सिंप्लीफिकेशन मीन्स P डॉट Q therefore P. यहाँ पे हम लोगों ने एडिशन यूज़ किया है. नंबर 5 एडिशन मतलब P के साथ आप कोई भी वेल साइन के साथ कोई भी वेरिएबल ऐड कर सकते हो. तो हम लोगों ने C ऐड कर लिया. और यहाँ पे 2 और 6 और MP मॉडस पोनेंस को यूज़ करके कंक्लूजन निकला है. 2 मीन्स P horseshoe Q, 6 मीन्स P therefore Q. ओके, क्लियर? बट द मुद्दा जो बात है ये है, ये नया रूल, कंडीशनल प्रूफ का रूल. ये रूल आप लोग अच्छे से याद कर ले. कंडीशनल प्रूफ होने से आप लोगों को ये रूल यूज़ करना है, और उसके बाद एज यूजुअल जो 19 रूल्स है उसके साथ आप कंक्लूजन को प्रूफ कर सकते हो. नाउ लेट अस गो टू द इनडायरेक्ट प्रूफ. So what is the rule for indirect proof of validity? The rule is P therefore not P. This is the rule of indirect proof, that is IP. IP मतलब indirect proof. This is the rule. P therefore not P मतलब जो भी कंक्लूजन है उसका ऑपोजिट करना है. अगर यहाँ पे नॉट P होता तो आप P करते. ठीक है, और उसके बाद एज यूजुअल आपको आंसर निकालना है. So this is the rule of indirect proof. So let us again solve one question, one example with the help of indirect proof. This is the question. इसको we will try to solve it with indirect proof. See, the conclusion is E. So with the help of the rule of indirect proof हम लोगों ने इसको not E कर दिया है, opposite. Okay, this is the rule. So we have used indirect proof. बाकी सारे रूल्स सेम है.
Okay, in indirect proof, there is not compulsory that we have to prove the exact conclusion that which we derive from indirect proof, the rule of indirect proof. In indirect proof of validity, for a given argument is constructed by assumption or assuming as an additional premise the negation of its conclusion, and then deriving an explicit contradiction from the argument set of premises. So फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट सेट ऑफ प्रेमिसेस हम लोग कोई भी एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रोडिक्शन निकाल सकते हैं. द एग्जैक्ट जो कंक्लूजन है वो एग्जैक्ट कंक्लूजन निकालना ज़रूरी नहीं है. सो टू मेक इट मोर ईजियर फ्रॉम द एक्सप्लिसिट we can prove an explicit contradiction from the argument set of premises. Okay, so मैं ये लिख के देती हूँ आप लोगों को. Okay, so see, this is the indirect proof of validity. So हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया for indirect proof of validity. In indirect proof of validity for a given argument is constructed by assuming as an additional premise the negation of its conclusion, and then deriving an explicit contradiction from the argument set of premises. Okay, so we can derive an explicit contradiction from the argument set of premises. So this is called indirect formal proof of validity. So there are direct formal proof of validity, conditional formal proof of validity, and इनडायरेक्ट फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी. वेल मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं. फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे पूछे. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू अगैन. और हाँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. यू हैव टू प्रैक्टिस इट, और यू हैव टू लर्न द 19 रूल्स ऑफ इन्फरेंस एंड रिप्लेसमेंट टुगेदर विद द रूल ऑफ एब्सॉर्प्शन. ओके, ये सारे रूल अच्छे से याद करें और प्रैक्टिस करें. यू कैन ईजिली कंस्ट्रक्ट द फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी. ओके, बाय. हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू.